1. Dismemberment. टुकड़े, तकसीम, कट तकसीम मलिक हिस्से, बखरे जोड़ जोड़ बंद बंद अलग करना, टुकड़े टुकड़े कर देने का अमल, किसी शख्स या जानवर की लाश को काटना या फाड़ना. Meaning, dismemberment refers to the act of cutting off or removing the limbs or other body parts of a person or animal. Synonyms: dissection, severance, mutilation, amputation, partition, fragmentation. 2. Abolish. बातिल करना, मौकूफ करना, मनसूख करना है, रद्द करना, कालअदम करार देना, खत्म करना, बर्खास्त करना. Meaning, to formally put an end to something. Synonyms: eradicate, eliminate, annul, nullify, revoke, quash. 3. Devolve. फर्ज के तौर पर मुंतकिल करना, आगे बढ़ाना, सुपुर्द करना, वर्सा को मुंतकिल करना, सुपुर्द होना, तफवीज होना, हवाले करना. Meaning, to pass on or be passed on from one person or entity to another, usually becoming worse or less desirable. Synonyms: degenerate, deteriorate, decline, descend, regress, retrogress, sink, slide, worsen. 4. Strengthen. मजबूत करना, ताकत में इजाफा करना, पुख्ता करना, साबित कदम रखना, मुस्तहकम कर देना, पक्का करना, तकवीयत पहुंचाना, ताकतवर हो जाना, ताकत पकड़ना, बढ़ाना. Meaning, to make something stronger or more powerful. Synonyms: reinforce, fortify, enhance, boost, intensify, invigorate, consolidate, toughen. 5. Irreducible. छोटा आसान बनाना नामुमकिन है, नाकाबिल तहवील, नाकाबिल तखफीफ, तहवील नापजीर, नाकाबिल तस्हील, जो घटाया ना जा सके, मतलूबा हालत की तरफ नहीं लाया जा सकता. Meaning, not capable of being reduced or simplified. Synonyms: intractable, complex, complicated, unbreakable, indivisible, indissoluble. 6. Evolve. वाकयात नजरियात का इस्तनबात, तह खोलना, सुलझाना, कुदरती नशोवनमा होना, बतदरीज तैयार, मुरत्तब करना, तरक्की देना, इर्तकाई मराहिल तय करना, वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता तब्दील या तरक्की करना. Meaning, to develop gradually over time, to change and improve through a natural process. Synonyms: develop, progress, advance, grow, mature, expand, transform, metamorphose, unfold. 7. Defection. इन्हिराफ, किसी सियासी जमात, मुल्क वगैरह को छोड़कर किसी दूसरे सियासी जमात में शामिल होने का अमल जिसे दुश्मन समझा जाता है. गद्दारी, बेवफाई, इर्तिदाद. Meaning, the act of abandoning one's country or cause for another. Synonyms: desertion, apostasy, rebellion, revolt, betrayal, treachery, disloyalty, mutiny. 8. Disregard. गफलत करना, नजरअंदाज करना, परवाह न करना, लिहाज न करना, नजरअंदाज, अदम तवज्जुही, बेपरवाही, बेतवज्जुही, गफलत. Meaning: 1. Verb, to ignore or pay no attention to something. 2. Noun, lack of attention or respect, disregard for something is to ignore it or not consider it important. Synonyms: 1. Verb, ignore, neglect, dismiss, overlook, discount, ignore. 2. Noun, neglect, indifference, inattention, unconcern, apathy, carelessness, heedlessness, oblivion. 9. Ironically. तान आमेजी से, तंजन, तंज से, तंजिया तौर पर, ताने के तौर पर. Meaning, in a way that is contrary to what was expected or intended. Synonyms: paradoxically, incongruously, unexpectedly, surprisingly, contrary to expectations, by contrast, oddly, perversely. 10. Ominous. मनहूस, बदशगुन का, नामसूद. तेसा, बदशगुनी वाला, बुरा शगुन. तशबी, मनहूस, नामुबारक. Meaning,
giving the impression that something bad or unpleasant is likely to happen, threatening or foreboding. Synonyms: menacing, threatening, foreboding, portentous, sinister, inauspicious, alarming, forbidding, dangerous. 11. Characterize. खसलत बयान करना, खासियत बयान करना, मौसूम करना, तस्वीर कशी करना, मुत्तसिफ करना, मशख्स करना. Meaning: to describe or distinguish the qualities of something or someone. Synonyms: describe, depict, classify, portray, identify, mark, brand, label, define, qualify. 12. Amend. तब्दील करना है, दुरुस्त करना, ठीक करना, तरमीम करना, किसी हुक्म या मनसब वगैरह को बदलना, बेहतर बनाना या बेहतर सूरत में तब्दील करना, बदल देना, तरमीम करना, सुधारना. Meaning: to make changes or corrections to something, especially a legal document or a piece of writing. Synonyms: revise, modify, alter, change, adjust, edit, improve, correct, update, refine. 13. Proviso. शर्त, तकरार शर्तिया, इकरार, किसी आइन, मुआहदे, अहदनामे. Meaning: a clause or condition in a legal document or agreement that stipulates a specific requirement or restriction. Synonyms: condition, stipulation, clause, qualification, provision, prerequisite, requirement, demand. 14. Sustain. बर्दाश्त करना, सहना, संभालना, जीना छोड़ना, तौसीक करना, तस्दीक करना, संभाले रखना, करार देना. Meaning: to support, strengthen, or maintain something or someone over a period of time. Synonyms: maintain, support, uphold, nourish, endure, continue, preserve, keep, prop up, carry on, bolster, back up. 15. Promulgate. लागू करना, शाये करना, नाफिज करना, मुश्तहर करना, हुक्म ज़ाब्ता नाफिज करना, खुले ऐलान के जरिए लोगों के इल्म में लाना, जैसे कवानीन, फरामीन या कोई खुश खबरी, ऐलान करना, मनादी करना. Meaning: to promote or make widely known, especially a law or idea. Synonyms: publicize, propagate, disseminate, circulate, spread. 16. Legislature. मजलिस कानून साज, सरकारी तौर पर बाइख्तियार मुंतखब लोगों की मजलिस जो कानून बनाती, मंसूख करती और उनमें तरमीम करती है. Meaning: a legislative body of a country or state that makes laws. Synonyms: parliament, congress, assembly, council, senate, chamber, house, legislative body. 17. Blot. दाग, धब्बा, कलंक का टेका, शोहरत पर दाग है, धब्बा डालना, दाग लगाना, इज्जत खराब करना. Meaning: 1. Noun: a dark mark or stain on a surface or a person's reputation. 2. Verb: meaning: to make a mark or stain on something, to tarnish or blemish something. Synonyms: 1. Noun: stain, spot, blemish, mark, smudge, tarnish, taint. 2. Verb: smudge, spot, stain, blotch, mark, sully, defile, taint. 18. Coerce. मजबूर करना है, दबा डालना, जब से हासिल करना, गसब करना, जबरदस्ती करना, जोर डालना, बजोर रोकना, किसी से जबरन काम कराना. Meaning: to compel or force someone to do something against their will, often through the use of threats or force. Synonyms: pressure, force, constrain, oblige, impel, drive, urge, compel, intimidate, bully. 19. Haste. भाग दौड़, उजलत, जल्दी जल्दी से, शिताबी, तावली, तेजी, तरसील, मुहिम. Meaning: the quality of acting quickly and with little thought, excessive speed or urgency. Synonyms: hurry, rush, speed, urgency, hastiness, quickness, celerity, dispatch, expeditiousness. 20. Assert.
ऐलान करना है, कहना, तस्दीक करना, जोर देना, जम करना है पर जोर, दावा करना, कसूक से कहना, जोर से कहना, अपने हक पर जमे रहना, अपनी बात मनवाना, हक जिताना, दादी से कहना. Meaning, to state or declare something forcefully or confidently. Synonyms: declare, state, claim, affirm, aver, maintain, allege, profess, argue, insist, proclaim. 21. Rightful. जायज वारिस, मुद्दई, तालिबा हकदार, मुनासिब माकूल, वाजिब, हकदार, हलाल, शरी. Meaning, having a legitimate or just claim, or according to what is morally or legally correct. Synonyms: legitimate, legal, lawful, authorized, valid, justified, rightful, just, proper. 22. Scrutinize. जांचना, पड़तालना, जांच पड़ताल करना, छानबीन करना, छांटी करना, इम्तिहान करना, मुआयना करना. Meaning, to examine something closely and carefully. Synonyms: inspect, examine, analyze, study, explore, investigate, probe. During the past 50 years, the 1973 Constitution of Pakistan has been amended 23 times, an amendment every 2 years on average. This is no surprise, as the constitution of any country is a dynamic document and amendments are made in response to evolving requirements. India, which became independent at the same time as Pakistan, amended its constitution 105 times since the document was framed in 1950. However, the U.S. made just 27 amendments in 203 years of its constitutional history. Pakistan's constitution has evolved in several significant ways during the past 50 years. Parliament addressed the most sensitive issue of provincial autonomy through the 18th Amendment in 2010. It was the same issue which had led to the dismemberment of Pakistan in 1971 and had been a source of bitterness in the remaining 4 provinces ever since. The concurrent legislative list was abolished through the 18th Amendment and a number of federal ministries were devolved to the provinces. The Council of Common Interests and the National Economic Council were further strengthened as a result. One of the most significant parts of the amendment was that, by inserting a new Clause 3A under Article 160, the share of the provinces in each National Finance Commission award was made irreducible compared to the previous award. A system of caretaker governments was not provided in the original constitution. The 18th Amendment introduced caretaker governments during the election by adding Clause 1A in Article 224 of the Constitution. The system was further refined through the 20th Amendment in 2012. Other amendments were made to the Constitution to reform the electoral process in a significant way. The 18th Amendment, through Article 213, did away with the discretionary powers of the President to appoint the Chief Election Commissioner and Commission members and provided for the appointments after consultation between the Prime Minister and the Leader of the Opposition and through a parliamentary committee. The Indian Parliament had been struggling for decades to pass a similar amendment to their constitution but has not succeeded so far. These provisions were further refined through the 19th and 20th Amendments. Half a century after it was passed, the 1973 Constitution continues to evolve. The provisions relating to the defection of legislators have undergone several modifications since the original Constitution was passed in 1973. Although the original Constitution did not include a defection clause as such, a temporary provision for 10 years or the holding of the second general election, whichever occurred later, was included in Article 96 that the vote of an MNA, as a candidate or nominee of a political party, cast in support of a no-confidence resolution, would be disregarded if the majority of the members of that political party cast their vote against such a resolution. A new Article 63A was added to the Constitution through the 14th Amendment in 1997 during Prime Minister Nawaz Sharif's time, which contained sweeping provisions to bind legislators to the dictates of their parliamentary party head.
A violation of the party direction would result in disqualification on the basis of defection. The 17th, and later the 18th, Amendment balanced the provisions which constituted defection and disqualifications by restricting the compulsion to follow the party line to voting on the election of the Prime Minister or Chief Minister, constitutional amendments, vote of confidence or no confidence in or against the PM or CM, or a money bill. A significant feature of the amended 63A was that although defecting members would be disqualified, there was nothing in the Constitution which suggested that their votes would be disregarded. Ironically, a majority judgment of a 5-member Supreme Court bench declared in May 2022 that the votes of the defecting members would be disregarded, going back to the temporary provision included in the original 1973 Constitution, with the ominous difference that this time, disregarding the vote of defecting members was not temporary. One of the dissenting judges characterized the judgment as rewriting of the Constitution. Through several amendments, the total number of members in the National Assembly, Senate and provincial assemblies and representation of women and religious minorities were also increased. The Senate was authorized by amending Article 73 to discuss the money bills and send recommendations to the National Assembly. The addition of provisos to Articles 92 and 130 made through the 18th Amendment capped the number of ministers and ministers of state in the federal cabinet at 11% of the total strength of Parliament. This provision reduced the average number of cabinet members after the amendment came into effect. While recounting the significant ways in which the Constitution evolved in the past, one can't help pointing out the critical need for some other amendments. There are many constitutional, electoral and local government experts who strongly believe that more details about the third tier of government, the local governments, should be provided in the Constitution. India realized the need to add 2 specific chapters to its constitution, one on the grassroots local governments, panchayats, and the other regarding municipal committees, about 42 years after the document was framed because their state governments were just not serious about forming and sustaining local governments. The time has come for us to do the same with due respect to provincial autonomy. The power of the executive to promulgate ordinances under Articles 89 and 128 of the Constitution needs to go, as any legislation without legislatures is simply a blot on democracy. The powers of the government to make modifications in the budget and authorize expenditure from the Federal Consolidated Fund without recourse to the legislature under Article 84 of the Constitution is simply unacceptable in a democracy and should change. Lastly, Parliament was coerced in 2010 to water down its role in the appointment of judges, and it had to post-haste pass the 19th Amendment. Parliament should amend Article 175A to assert its rightful role in scrutinizing the appointment of judges to the superior courts. The writer is president of the Pakistan Institute of Legislative Development and Transparency. Published in Dawn, April 8, 2023. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. youtube.com/@dawnvocabulary. गुज़िश्ता 50 सालों के दौरान पाकिस्तान के 1973 के आइन में 23 बार तरमीम की गई है, औसतन हर 2 साल में एक तरमीम। ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि किसी भी मुल्क का आइन एक मुतहर्रिक दस्तावेज है और तरक्की पजीर तकाज़ों के जवाब में तरामीम की जाती है। पाकिस्तान के साथ ही आज़ाद होने वाले भारत ने 1950 में दस्तावेज तैयार होने के बाद से अपने आइन में 105 बार तरमीम की है। ताहम अमेरिका ने अपनी 203 साला आइनी तारीख में सिर्फ 27 तरामीम की है। पाकिस्तान का आइन गुज़िश्ता 50 सालों के दौरान कई अहम तरीकों से तैयार हुआ है। पार्लियामेंट ने 2010 में 18वीं तरमीम के जरिए सूबाई खुद मुख्तारी के हसास तरीन मसले को हल किया। ये वही मसला था जिसकी वजह से 1971 में पाकिस्तान टूट गया था और उसके बाद से बाकी 4 सूबों में तलखी का बाइस बना हुआ था। 18वीं तरमीम के जरिए कंकरेंट लेजिस्लेटिव लिस्ट को ख़त्म कर दिया गया और मुतअद्दिद वफाकी वज़ारतें सूबों को तफवीज़ कर दी गई। इसके नतीजे में मुश्तरका मुफादात काउंसिल और कौमी इक्तिसादी काउंसिल मज़ीद मजबूत हुई।
तरमीम का सबसे अहम हिस्सा ये था कि आर्टिकल 160 के तहत एक नई शिक 3 ये शामिल करके हर नेशनल फिनेंस कमीशन अवार्ड में सूबों का हिस्सा पिछले अवार्ड के मुकाबले में नाकाबिल तलाफी बना दिया गया था। निगरान हुकूमतों का निज़ाम असल आइन में फराहम नहीं किया गया था। 18वीं तरमीम के तहत आइन के आर्टिकल 224 में शिक 1 ए शामिल करके इंतखाबात के दौरान निगरान हुकूमतों को मुतारफ कराया गया। 2012 में 20 तरमीम के जरिए इस निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाया गया। इंतखाबी अमल में नुमायां अंदाज में इस्लाहात के लिए आइन में दीगर तरामीम की गई। 18 तरमीम ने आर्टिकल 213 के जरिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कमीशन के मेंबरान की तकर्रुरी के सदर के सवाबदीदी इख्तियारात को ख़त्म कर दिया और वज़ीर आज़म और कायद हिज़्ब इख्तिलाफ की मशावरत और पार्लिमानी कमेटी के जरिए तकर्रुरियों का एहतमाम किया। हिंदुस्तानी पार्लियामेंट अपने आइन में इसी तरह की तरमीम को मंजूर करने के लिए दहाइयों से जिदोजहद कर रही थी, लेकिन अब तक कामयाब नहीं हुई है। 1900 और 20 तरमीम के जरिए इन दफात को मजीद बेहतर बनाया गया। इसकी मंजूरी के निस्फ सदी बाद 1973 का आइन मुसलसल तरक्की कर रहा है। 1973 में असल आइन पास होने के बाद से कानून साजों की पार्टी छोड़ने से मुताल्लिक दफात में कई तब्दीलियां की गई हैं। अगरचे असल आइन में इस तरह की तब्दीली की शिक शामिल नहीं थी, लेकिन 10 साल के लिए आर्जी एहतमाम और दूसरे आम इंतखाबात का इनेकाद, जो भी बाद में हुआ, आर्टिकल 96 में शामिल किया गया था कि MNA का वोट किसी सियासी जमात के उम्मीदवार नामजद के तौर पर अदम एतमाद की करारदाद की हिमायत में डाला गया था। अगर इस सियासी जमात के अरकान की अक्सरियत इस तरह की करारदाद के खिलाफ वोट डालती है तो उसे नज़रअंदाज किया जाएगा। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दौर में 1997 में 14 तरमीम के जरिए आइन में एक नया आर्टिकल 63 शामिल किया गया था, जिसमें कानून साजों को उनकी पार्लिमानी पार्टी के सरबराह के हुक्म पर पाबंद करने की वसी शिक्क़ें शामिल थी। पार्टी की हिदायत की खिलाफ वर्जी के नतीजे में पार्टी छोड़ने की बुनियाद पर नाअहल करार दिया जाएगा। 17 और बाद में 18 तरमीम ने उन शिक्कों को मुतवाज़िन किया जो पार्टी लाइन पर अमल करने की मजबूरी को वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के इंतखाब पर वोट देने, आइनी तरामीम, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के इंतखाब के खिलाफ एतमाद अदम एतमाद मनी बिल तक महदूद करती है। तरमीम शदा 63 की एक अहम खुसूसियत ये थी, अगरचे पार्टी छोड़ने वाले अरकान को नाअहल करार दिया जाएगा, लेकिन आइन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे ये इशारा मिलता हो कि उनके वोटों को नज़रअंदाज किया जाएगा। सितम ज़रीफ़ी यह है कि मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के अक्सरियती फैसले में यह ऐलान किया गया था कि मुनहरिफ अरकान के वोटों को नज़रअंदाज किया जाएगा। 1973 के असल आइन में शामिल आर्जी शिक की तरफ वापस जाते हुए इस मनहूस फ़र्क के साथ कि इस बार मुनहरिफ अरकान के वोट को नज़रअंदाज करना आर्जी नहीं था। इख्तिलाफ राय रखने वाले जजों में से एक ने इस फैसले को आइन को दोबारा लिखने के तौर पर बयान किया। मुतअद्दिद तरामीम के जरिए कौमी असेंबली, सेनेट और सूबाई असेंबलियों में अरकान की मजमूई तादाद और ख़वातीन और मजहबी अक़लियतों की नुमाइंदगी में भी इजाफा किया गया। सेनेट को आर्टिकल 73 में तरमीम करके मनी बिल्स पर बहस करने और कौमी असेंबली को सिफारिशात भेजने का इख्तियार दिया गया था। 18वीं तरमीम के जरिए आर्टिकल 92 और 130 में शिक्कों के इजाफे से वफाकी काबीना में वुज़रा और वुज़राए ममलुकत की तादाद पार्लियामेंट की कल तादाद का 11% मुकर्रर की गई है। इस शिक ने तरमीम के नफाज के बाद काबीना के अरकान की औसत तादाद को कम कर दिया। माजी में आइन की तश्कील के अहम तरीकों का जिक्र करते हुए कुछ दीगर तरामीम की अशद ज़रूरत की निशानदेही किए बगैर नहीं रह सकता। बहुत से आइनी, इंतखाबी और मकामी हुकूमतों के माहिरीन हैं जो इस बात पर पुख्ता यकीन रखते हैं कि हुकूमत के तीसरे दर्जे यानी मकामी हुकूमतों के बारे में मज़ीद तफसीलात आइन में फराहम की जानी चाहिए। हिंदुस्तान को अपने आइन में 2 मखसूस अबवाब शामिल करने की ज़रूरत का एहसास हुआ। एक निचली सतह की मकामी हुकूमतों, पंचायतों के बारे में और दूसरा म्यूनिसिपल कमेटियों के बारे में। दस्तावेज़ तैयार होने के तकरीबन 42 साल बाद, क्योंकि उनकी रियासती हुकूमतें मकामी हुकूमतों की तश्कील और बरकरार रखने के बारे में संजीदा नहीं थी, अब वक्त आ गया है कि हम सूबाई खुद मुख्तारी का एहतराम करते हुए ऐसा ही करें।
आइन के आर्टिकल 89 और 128 के तहत आर्डिनेंस जारी करने का एग्जीक्यूटिव का इख्तियार खत्म होना जरूरी है, क्योंकि मुकन्नना के बगैर कोई भी कानून साजी जमहूरियत पर एक धब्बा है। आइन के आर्टिकल 84 के तहत मुकन्नना का सहारा लिए बगैर बजट में तरमीम करने और फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से अखराजात की इजाज़त देने के हुकूमत के इख्तियारात जमहूरियत में नाकाबिल कबूल हैं और उन्हें तब्दील होना चाहिए। आखिर में 2010 में पार्लियामेंट को मजबूर किया गया कि वो जजों की तकर्रुरी में अपना किरदार कम करे और इसे जल्दबाजी में 1900 तरमीम मंजूर करनी पड़ी। पार्लियामेंट को चाहिए कि वो आर्टिकल 175 में तरमीम करे ताकि आला अदालतों में जजों की तकर्रुरी की जांच पड़ताल में इसके जायज़ किरदार पर जोर दिया जा सके। मज़मून निगार पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी के सदर हैं। अखज़ शुदा बतारीख 8 अप्रैल 2023। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@dawnvocabulary. Like, subscribe, share and comments.